Good morning, friends. Welcome to the SBI Securities Daily Morning Podcast. So, the Indian markets yesterday ended lower by 0.5%, and there is uncertainty regarding what the tariff rate will be from the US, and also ahead of the earnings season, markets are consolidating in a range. यूएस ने ओवरनाइट कनाडा पे 35% टैरिफ अनाउंस किया है। ये अगर हम देखें अप्रैल में 25% था रेट, तो ये टैरिफ रेट बढ़ के आया है। देर इज स्पेस फॉर नेगोशिएशन स्टिल 1st August, but yesterday Brazil, today Canada, and also Donald Trump highlighted that most countries would be facing 15 to 20% tariff. So again, the tariff tantrums have started. However, markets, if you see, Asia is mixed, largely in green, and ignoring these fresh updates on the tariff front. US also ended higher overnight, but futures, US futures देखे तो 0.5% नीचे है। ट्रम्प ने अनाउंस किया कि रशिया पे एक मेजर अनाउंसमेंट आएगा मंडे को, तो इसके चलते अगेन जियोपॉलिटिकल टेंशंस अगेन हाई रहने वाले हैं। एंड गिफ्ट निफ्टी भी एक 130 to 140 पॉइंट्स का गैप डाउन इंडिकेट कर रहा है। Coming to the result updates of yesterday, so TCS overall weak set of results. The constant currency revenue decline was higher than estimate. Attrition has been was higher. So again, weak set of numbers. However, management has highlighted in the call that Q2 will be better than Q1, but challenges continue with high US exposure. So expect negative reaction on TCS today. टाटा एलेक्सी में भी नंबर्स वीक थे, मार्जिन डिक्लाइन था, ओवरऑल कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी फ्लैट था। एंड कंपनी ने कमेंट्री में मैक्रो इकोनॉमिक और टैरिफ रिलेटेड अनसर्टनटीज जताई है, तो इसके चलते टाटा एलेक्सी भी प्रेशर में रह सकता है। स्टॉक ने हाल ही में एक अच्छी 24% की रैली दी है, तो इसके चलते आज नेगेटिव रहने के चांसेस है टाटा एलेक्सी पे। आनंद राठी रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ numbers. The mutual fund inflows and the AUM continues to grow, so expect positive reaction on Anand Rathi Wealth. IREDA numbers वीक थे, एसेट क्वालिटी पे प्रेशर देखा जा रहा है, तो एक्सपेक्ट नेगेटिव रिएक्शन ऑन IREDA. आज के रिजल्ट्स की बात करें तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एलिकॉन इंजीनियरिंग एंड आदित्य बिरला मनी के आज रिजल्ट्स आएंगे. Coming to other stock specific news, so HUL, the CEO and MD Rohit Java has decided to step down effective 31st July. And a long-time HUL employee, Priya Nair, will be the MD and CEO for 5 years effective 1st August. So there could be some positive reaction on HUL today. Glenmark Pharma, its subsidiary IGI Therapeutics, has announced an exclusive global licensing agreement for cancer and autoimmune drug, and thereby Glenmark Pharma's subsidiary will be receiving an upfront payment of $700 million and more milestone payments ahead. So huge positive for Glenmark Pharma. Z Entertainment, the shareholders yesterday rejected the proposal to raise funds via the warrants issuance to promoters. So negative for Z Entertainment. Popular Vehicles को एथर के शोरूम्स सेटअप करने के लिए ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट मिला है इन चेन्नई, सो पॉजिटिव रहेगा फॉर पॉपुलर व्हीकल्स. Aegis Logistics has decided to transfer the Pipavav LPG terminal to Aegis Vopak terminals for 428 crores. So both Aegis Logistics and Aegis Vopak terminals will be in focus. Birla Corp has emerged as a preferred bidder for grant of a mining lease for a limestone block in Rajasthan. So positive for Birla Corp as well. Crystal Integrated Services has received 20 crore facility management contract for the new terminal at Patna Airport. So neutral to positive for Crystal Integrated as well. JSW Infra, the creditors have approved the company's resolution plan for NCR rail infrastructure. So this is another acquisition for the company and will expand the company's presence in rail logistics. So neutral to positive for JSW Infra as well.
आज अगर एक्स बोनस की बात करें तो डायनामिक केबल्स 1:1 का बोनस रेशियो है, एक्स बोनस ट्रेड करेगा, एंड रोटो पंप्स 2:1 का रेशियो है, आज एक्स बोनस ट्रेड करेगा. So friends, these were all the updates on the podcast today. Thank you for listening. Have a happy trading session. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.